पानी हमारा खुश्क हो गया चिकन में, रेशे बनाएंगे और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। चिकन के रेशे हमने बना लिए और इसमें हम एक प्याज हमने बारीक काट ली वो शामिल करेंगे। मैश कर लिए, अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन में। आलूओं की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा। हमारा तैयार हो गया, अब इसके मैं कबाब बना लूँगी। ऑयल लगा लेंगे। हमारे तकरीबन हमने बना लिए, रेडी हैं। अब इसको हम फ्राई करके बताएंगे आपको।